मैं जो हूँ ना कभी ग्रुप में राइड वगैरह नहीं किया हूँ, तो डिसिप्लिन आप लोगों से सीख रहा हूँ। With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? With my head again, you had your heart set on me. मैं जो हूँ ना कभी ग्रुप में राइड वगैरह नहीं किया हूँ, तो डिसिप्लिन आप लोगों से सीख रहा हूँ कि कैसे क्या क्या ये एक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करने होते हैं रोड पे। तो जो ऑफरोड का यहाँ पे सीन था, बहुत ऑफरोड का जो सीन था ना यहाँ पे, वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब सबसे ज्यादा एडवेंचर वाला पार्ट जो है ऑफरोड है भाई। और जो अपन जब गली में घुसे अपन इस रोड वाले, वहाँ के बाद जो रोड चालू हुई, उसके बाद ये जो ऑफ रोड आया, तो ये जो अपन झाड़ जंगल में घुस गए, मतलब ये सब कुछ अपने जो एक्सपीरियंस किया काफी अच्छा था। वही तो रोड पे तो अपन रोज गाड़ी चलाते हैं। वही तो मैं हमेशा ब्लॉग में बोलता हूँ कि मजा जो होता है वो सफर का होता है, डेस्टिनेशन का नहीं होता है। और थैंक्स टू आलोक भाई जिन्होंने अपना बाइक जो है खतरे में डाल करके बाइक की जान को खतरे में डाल करके यहाँ तक। अभी हमारी गाड़ी आपको हरी हरी वो पानी में दिख रही होती। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग राइड किए, और आगे भी राइड करेंगे इसी तरह। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो जरूर से देखिएगा। सभी लोगों के चैनल को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। तो थोड़ा देर यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा चिल मारते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। Messing with my head again.